बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपके मेज़बान वक़्र अली ख़ान TV1 प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। और आज बहुत सारे सफ़ीरान पाकिस्तान मेरे साथ होंगे। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि TV1 एक बेहतरीन प्रोग्राम है, डोमेस्टिक, ज़्यादातर इनकी लोकल प्रोग्रामिंग है जो वक्त की ज़रूरत है। और जितने बड़े बड़े टेलीथॉन यहाँ होते हैं शायद किसी और टेलीविज़न पे होते होंगे। इसकी वजह यह है कि ये इफ़ेक्टिव है एंड लार्जली वॉच प्रोग्राम है ये TV1 जो है चैनल। और इसीलिए मैंने इनको ज्वाइन किया और यहाँ मैं प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ कई महीनों से। और रियाज बाबर साहब जो हैं एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो काफ़ी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम तरीन मौजू है और वह हेल्थ केयर से रिलेटेड। जैसा जानते हैं कि हमारे बहुत से फिजिशियंस, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स कोरोना के दौर में उन्होंने बड़ा काम किया और अपनी जानों को भी ख़तरे में डाला। हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया था हेल्थ केयर के ऊपर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर। और उसमें हमने जो आयशा अली है, हमारी जो कौंसल जनरल है न्यूयॉर्क की, बहुत ही यानी कि मोहतरम शख्सियत है वो, माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट खातून है वो। तो हमने उनको दावत दी थी कि वो मुलाकात करें लोगों से और बातचीत करें। जैसे हमने कुछ एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलाया और कुछ हेल्थ केयर लोगों को बुलाया। तो ज़्यादातर हेल्थ केयर पे प्रोग्राम था वो, और उसमें सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लेकर आऊँ। और अब क्योंकि मैं एक दूसरा चैनल भी चलाता हूँ 24/7 OPTV ग्लोबल, अगर आपको कभी मौका हो तो जाइए, उसका जाके देखें। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। और OPTV ग्लोबल वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है और मैं उसका CEO हूँ जो 24/7 चलता है, optvglobal.com। उसका ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त रियाज बाबर भी बड़ी मेरी मदद करते हैं उस सिलसिले में। और आज का ये प्रोग्राम बड़ा सैर हासिल है, बहुत ही मालूमाती है, इंफॉर्मेटिव है। और अगर आप प्रोग्राम को देखें और आपको प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए, बताइए कि आप प्रोग्राम आपको कैसा लगा। देखें, पाकिस्तान से आगे और सफ़ीर पाकिस्तान एक अहम तरीन प्रोग्राम है। और आपने मुझे तकरीबन साल से देखा है, मैं प्रोग्राम करता आ रहा हूँ। अभी ये जो भी चल रहा है कि यार वक़ार साहब को 20 साल पहले हमने बचपन में देखा था TV पे, तो अब ऐसी चीज़ें आने लगी हैं। तो मुझे खुशी होती है कि यार लोग मुझे याद रखते हैं। और देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम किया है। मैं बता दूँ, मैंने हमेशा पॉजिटिव पिक्चर पेश की है पाकिस्तान की, और मैंने कई शख्सियतों को आगे लेकर आ रहा हूँ। आजकल मैं बिल्कुल लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसकी दाग में मैंने डाली है मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और मैं उन मालकान को, उन TV चैनल ओनर्स को, रेडियो ओनर्स को, अखबार ओनर्स को उनका हक़ दिलाना चाहता हूँ जो साल से सदियों से अमेरिका में प्रोग्राम कर रहे हैं अपने पैसे से, अपने रिसोर्सेज से, लेकिन आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कौमी धारे में ले कर नहीं आए और ना ही उन पर कोई तवज्जो दी गई। एक्चुअली ये स्लीपिंग जॉइंट है, बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक मोनूमेंट्स है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीडिया ओनर्स जो हैं, जो मुख्तलिफ दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान टेलीविजन्स और रेडियो चैनल्स, अखबार, जराइद, फेसबुक शोज़, TV शोज़, यूट्यूब शोज़ चलाते हैं, वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसको हुकूमत पाकिस्तान टेप करने में नाकाम रही है सो फार। नाज़रीन, तो आइए लिए चलते हैं आपको इस हेल्थ केयर प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मुझे फरमाइए ये रिपोर्ट। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ओपीटीवी ग्लोबल टीवी नेटवर्क आपको खुशामदीद कहता है और आज भी मेरी बड़ी खुशी है और ये बाइस से मुसरत है मेरे लिए कि जिसको मैंने कांटेक्ट किया, राब्ता किया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और पाकिस्तान के लिए और उन लोगों के लिए जिसको आप सेहतमंद देखना चाहते हैं आज इस पैनल में मौजूद हैं। मेरी तारीफ मैं क्या करूँ, यू नो एवरीबॉडी, आई एम executive producer, Safir Pakistan, 14-15 years, and I have a very major role with Apna all the time, almost 25 years. I work with Apna every president, and I travel with them, Pakistan, other countries, India as well, you know. तो ये बड़ी खुशी है मुझे। और आज एक्चुअली मीटिंग का मकसद ये था कि आयशा अली उनको हम पहले चांस देंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि राउंड अप इंट्रोडक्शन हो जाए। I'm going to start with नाइद उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और इस साल अपना की प्रेसिडेंट हूँ। जी, डॉक्टर सोहेल मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सब लोग। तो मैं सोहेल मसूद हूँ, मैं सीईओ हूँ काबा फ्यूजन का, जो कि होम इन्फ्यूजन कंपनी है नेशन वाइड। इट्स द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंटली ओन्ड नॉन स्टॉक मार्केट कंपनी, सो इट्स अ प्राइवेटली हेल्थ कंपनी। हम लोग घर पे मरीजों को इंट्रावेनस ड्रग्स और नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं। शाहिद खान साहब फ्रॉम बॉस्टन। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम शाहिद अहमद खान है। मैं पाकिस्तान का ऑनरी कौंसल जनरल न्यू इंग्लैंड स्टेट से सर्व करता हूँ और इसके साथ मैं रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में हूँ। हमारी जेवी पार्टनरशिप सैफायर ग्रुप के साथ है पाकिस्तान में, एंड वी हैव द लार्जेस्ट विंड एनर्जी farm in Pakistan. Now I'm going to be rolling with Dr. Nasser Qureshi, the former president of the APNA. He's the CEO, chairman of the QDEX. He's a very aggressive, mutaharrik शख्सियत है और मेरा इनका साथ बहुत रहा है अपना के अंदर। डॉक्टर नसर कुरैशी साहब। शुक्रिया वकार साहब, thank you for inviting me. So as a background, मैं pathologist हूँ and I'm the medical director of QDEX Pathology Services. I've had the pleasure पहले to serve as the president of APNA, and I'm the incoming chair of American Pakistan Foundation. And currently I'm on the forefront dealing with COVID. We do provide testing for COVID, especially for surgery centers who have patients who are scheduled and need results within 24 hours. बहुत shukriya. Thank you very much, Dr. Nasser Qureshi from New Jersey. And now I'd like to be rolling with the Dr. Sana Khan, MD, PhD, neurophysicist. Dr. Sana Khan. Assalamu alaikum. How are you guys doing? Thank you so much for having me. I'm just I've been on another webinar talking about COVID-19, and actually been broadcasting it to Pakistan as well. So a lot going on in the world. So I'm a radiologist, and I own imaging centers in California and in Texas. Top cardiologist, nuclear cardiologist, Dr. Jad Ahmed Saab.
Assalamu alaikum, everybody. Thank you very much, Waqar Sahab. We're very happy and proud to be with you in this project. I'm a cardiologist in New York, and also I'm building a hospital in Gujranwala, around 250 beds hospital, which will be mostly focused on cardiac and other care. And I want to know more about this project, and I'm happy to be part of it. Thank you very much. Dr. Amir Ehsan from San Antonio, another top genetic pathologist, very renowned. Mr. Amir Ehsan. First of all, congratulate in arranging again one of the wonderful program with all the movers and shakers of our community. मैं आमिर एहसान, मेरी graduation Dow से है. I'm from Karachi, and professionally I'm a molecular pathologist and hematopathologist, headquartered in San Antonio. मैं academically affiliated हूँ as a professor with University of Texas और VA hospital से as a chief of pathology. Nationwide, I chair the genomic program for the VA hospital across all states. I would like to invite Esma Qayyum. She recently came from Pakistan. She was serving on a very special project of infectious disease on HIV. इस सिलसिले में वो गई हुई थी, वहाँ पे काफी काम किया और अभी she returned from Karachi, Pakistan, and she is also from Boston. So the third time is always a charm, I would say. So I'm Asma Qayyum, and I just wanted to thank you for this wonderful project in which you guys are involved, and hopefully my involvement will be useful. I am an internist and also have a background in infectious disease. I practice in the greater Boston area. So Naheed is... Adil Najam, introduction. Adil Najam साहब, you are on board. बहुत शुक्रिया वकार साहब, बहुत शुक्रिया. मेरी आवाज भी म्यूट पे बेहतर होती है और मेरा तारुफ भी म्यूट पे बेहतर होता है. सो बहुत शुक्रिया फॉर दैट. मेरा नाम आदिल नजम है. मैं पढ़ाता हूँ. आई एम अ प्रोफेसर एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी. आई आल्सो सर्व एज द डीन ऑफ आवर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स. उससे पहले आई वाज वाइस चांसलर ऑफ लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस. यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे फिजिशियंस हैं. डॉक्टर मैं भी हूँ, लेकिन मैं किसी का भला नहीं कर सकता, तो मुझे आप मरीज ही समझे. नदीम सलीम. Ji, Assalamualaikum everybody. I am a partner actually in a financial planning firm called United Wealth Group. We are, alhamdulillah, actually a full service financial planning firm. And how this group can be helpful. Aisha Ali, Consul General of Pakistan, New York. वकार साहब बहुत शुक्रिया. I hope everyone can hear me. सबको मेरी आवाज़ सही आ रही है. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen, for taking your time out to be a part of this webinar today. वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया. You have been extremely persistent, and thank you for putting all of this together. I want to thank Dr. Usmani and particularly Dr. Ijaz from New York, and want to recognize बाकी तो वैसे तो सभी हमारे यहाँ पर जो panelists हैं, alhamdulillah, they have played a very important role in Pakistan's COVID-19 response in our efforts to combat this disease. लेकिन ख़ास तौर पे डॉक्टर उस्मानी का और डॉक्टर एजाज का और बाकी लोगों का जिक्र करना चाहती हूँ, who have raised millions of dollars, and they have contributed their time and saved hundreds and thousands of lives in Pakistan. All of you are physicians of Pakistani descent, as well as all other panelists जिनमें से कुछ से मेरी मुलाकात हुई है और कुछ से कोविड की वजह से अभी तक नहीं हो सकी. जब भी पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत पड़ी है और कोई भी कभी खुदा नास्ता जिस तरह से कोई नेशनल डिज़ास्टर होता है या कोई कैलामिटी होती है, तो हमारा डायस्पोरा एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तानी अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमेशा सफ़े अव्वल में रहे हैं. हमेशा आप लोगों ने पाकिस्तान की मदद की है, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. और हम ये समझते हैं कि आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया हैं और हमारे लिए you always give your best to Pakistan, for which on behalf of the government of Pakistan I'm very, very grateful to you. Thank you so much for all that you have done.
To be very honest, when I was prepping for this, I just thought कि एक ऐसे पैनल के सामने हेल्थ की बात करूंगी जिन्होंने decades अपनी जिंदगी के इस फील्ड में गुजारे हैं and who are alhamdulillah and mashallah all very very experienced and are experts and in their own particular fields. So my idea here is not to have a sort of a monologue, जिसमें मैं ही बात करती रहूंगी, बल्कि the idea is to have a conversation on a subject that is extremely important. Also important because we continue to be in the midst of this global pandemic, जो कि अब उसको शुरू हुए भी 1 साल हो चुका है, and unfortunately after a few slightly better months दोबारा हमें एक resurgence नजर आ रही है, especially in the US and in some of the states where we live. So the idea here is to talk about all these issues and from the government's perspective to give you an overview of. I'm very grateful to all of you for your patience and for being here at this platform, all of us together, and look forward to hearing your views. Bahut shukriya. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, everyone, and very detailed and very comprehensive report by the Consul General Aisha Ali. एंड अब मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली हमारी जो नायद उस्मानी हैं उन्होंने भी हाल में विजिट किया है पाकिस्तान का, और ये तो एक आपकी रिपोर्ट है गवर्नमेंट साइड की, जो गवर्नमेंट ये बहुत चीज़ें कर रही है, लेकिन उसमें हुआ ये है कि जब से ये ड्यूटीज़ फेडरल गवर्नमेंट को दी गई हैं तो उसमें काफ़ी लैकिंग हो रही है और काफ़ी उसमें प्रॉब्लम एंड इश्यूज आए हैं, और मैं समझता हूँ कि फेडरल को ये टेक ओवर करना चाहिए, ये हमारी भी गुजारिश है। तो डॉक्टर नाहिद उस्मानी आज मौजूद हैं अपनी एक प्रेजेंटेशन के सिलसिले में, और हमने इसको डेफिनेटली 5 to 6 मिनट का रखना है। और डॉक्टर नाहिद उस्मानी, यू आर ऑन बोर्ड, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच वकार साहब। थैंक यू सो मच मिस आयशा अली, काउंसिल जनरल पाकिस्तान। I would like to share my screen. So as Ms. Aisha Ali presented, primary care is Pakistan's critical need. We have to develop primary care to address all the healthcare disparities that exist in Pakistan. 207 million population, average age 66 to 68 years. 5-year mortality rate is very high, 8.1%, and health spending is low. But what is most important is healthcare allocation. 70% of all the healthcare is spent in Pakistan in tertiary care, and less than 0.1% is spent for maternal and child health, and little bit is spent on preventive care. And as you heard, the healthcare indices for Pakistan are one of the worst within our region. Dr. Aisha Ali, Miss Aisha Ali went over some of the things, but we have very high neonatal mortality, infant mortality, maternal mortality is extremely high. Our birth rates are tremendously high. Half our population is either underweight or stunted, and almost all children and pregnant women are anemic. So the health challenges, as described previously, are communicable diseases, maternal child health, and nutrition. That's half the burden of the national health disease status. And polio, 7th highest tuberculosis burden globally, hepatitis B and C, 1 in 10 people almost has hep C, malaria, and then multi-drug resistant typhoid. 2/3 of the mothers two-thirds of the mother don't have any antenatal care. There's very low contraceptive prevalence. And at least the data says only more than half the children are not fully immunized. About 40% of our population smokes. About 12% of our
population above 25 years of age has diabetes, 29% has high blood pressure. And in 2012, 3 major causes of death were ischemic heart disease, pneumonias, and stroke. Really high percentage when you compare it to the global burden. Ms. Aisha Ali, for stroke, which is such a high morbidity in Pakistan, for a number of other nursing specialty training, because the nurses there require a lot of training. We are going to be delivering multiple courses on different groups. Emergency medicine is a specialty that we think in Pakistan is lacking, so we are going to be developing that course. And we are really looking forward for APNA to participate in improving health education in various specialties in Pakistan. But our main focus is, if we can't change the primary care in Pakistan, none of the health indices will improve. And the government of Pakistan has to invest more than what it is investing right now, both provincially and nationally. And we will be there as APNA physicians. We will be there to partner with Pakistan in all these endeavors. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Nahid. Very comprehensive. I'm very proud of you. You have done a lot of work and very detailed. That's all we need to educate our officials, our people. What's going on the health sector. Jamal Khwaja is one of my friends. He's always with us on Zoom meetings. This is our second largest Zoom meeting on health. First, we have a trade and investment. Jamal is an investor and financial guru up in the real estate. Thank you, Jamal Khwaja, for your contribution all the time. Now, I'd like to invite the meeting took place because of Dr. Sohail Masood Saab. Dr. Sohail Masood Saab, you listening everything, and what's your take on it, and how you can be helpful, because your company is the largest in IVIG, immunoglobulin services, neuromuscular disorders, and you serve oncologists, you serve many areas of the infusions. So please give your opinion. Dr. Sohail Masood. Thank you, Waqar bhai. Assalamu alaikum, Aisha Ali. Sana bhai, it's always nice to see you. I love your beautiful home in the driveway. Basically, हमारी जो home infusion business है, वो क्या है? वो basically जो मरीज घर पे हैं, we try to make sure that they're compliant with their drugs, and they have the services available. जो डॉक्टर उस्मानी कह रही थी कि primary care जो portion है, a lot of that. Those kind of services can be done in primary care setting outside of the hospital, keeping the patients healthy and making sure that जो immediate needs हैं वो मरीजों को available हों. As we are looking at COVID-19, we also know कि भाई जो hospital में या clinical setting में जो मरीज जा रहे हैं, there is more chances of them getting exposed to COVID versus patients who are staying home and getting the infusions. So the way I look at it, home infusion has a major role to play in the coming years as these pandemics may come one after another. We don't know if it's from global warming, or is it because with just the population of Earth is more than what Earth can sustain. So I think that home infusion, if it can be expanded into Pakistan, especially it can be started in a bigger city or a town. Let's say, since I'm from Lahore, I can tell you, in Lahore, let's say somewhere we started and it started on a local basis and see how we can maintain the patients out of the hospital by providing them care when it's needed, making sure that the nurses are going to patient homes and they are monitoring their progress. All these kind of drugs that right now patients have to go to the hospital to get it done, they can be done at home, and only true emergencies should end up at the hospital. तो उससे क्या होगा कि आपके hospital beds जो हैं, they will be released from patients who really don't need to be in the hospital. Second thing is that as they're not coming to the hospital, there is less
crowdedness in the hospitals. And so I believe, I'm a firm believer of home infusion. This industry started 30 some years ago, and I've been involved with this industry since then. And with having all the technology available to us, either the infusion pumps or outpatient MRIs and X-rays and labs and everything else that we're talking about, you can really keep patients healthy at home. I cannot talk too much about the villages and faraway lands, because I don't even know how the healthcare is provided to those poor folks. But at least in the cities, if we are focusing on maintaining the health and welfare of patients outside of the hospital setting, we can do it 1/10 of the cost, and we can provide it very safely by nurses going to patient homes and infusing the drugs. It can be your iron deficiency, it can be your vaccinations, it can be your chemo drugs and pain management and all kind of things जो हमारे अभी अस्पताल में मरीज जाके लेट जाते हैं पाकिस्तान में और उनको ये दवाइयाँ लगती हैं, वो हम सब दवाइयाँ जो हैं वो बाहर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और घर में हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसीज आएँ, और वो I think that will be one of the ways to save cost. And I'll be more than happy to do जो भी मैं कर सकता हूँ. Thank you, Dr. Saab. Mashallah, you are one of the #1 company in home infusion, and you also be very big philanthropist, and you help a lot of in a political arena and religious and diaspora, and that's why I wanted to invite Aisha Ali to your place, and you invite other physician at your resident. But now we are, mashallah, doing pretty well here. So my next guest is also the former president of the APNA. He's been several times in Pakistan, and I've been with him several times in Pakistan, and he has a very good eye what going on. He's definitely professionally pathologist. Dr. Qureshi Saab, you are on board. Thank you so much, Waqar Saab. Thank you, Council General Aisha, for wonderful input, and it's heartening to see that there is a progress in Pakistan, and Nahid for the wonderful work that APNA has done this year. And there are a lot of people much more qualified than me on board for today's meeting, and I'll try to be short. I would like to address some of the points which the Council General had brought up and Nahid reiterated. So it's heartening to learn, but of concern when we speak about communicable and non-communicable diseases, and the focus remains on treatment. तो जब आप बात करती हैं या पाकिस्तान में आज बात हो रही है सेहत सहूलियत की, and you mentioned that it is for inpatients, let's recognize for a fact that Pakistan has the lowest number of beds anywhere in the world per 1,000 population. It's 0.4. Japan, which is an amazing number, is 14. And yes, we agree, India is just right there. And the example of Sri Lanka and Bangladesh that you gave are something that we should be targeting on. Magar, by the time our population reaches there, it's usually a bit too late. Communicable disease, non-communicable diseases के अंदर breast cancer की prevalence is extremely high. We lose a lot of lives because of that. And preventive measures for that or other diseases, which would be early screening and early treatment, amount to nearly zero in Pakistan. So we really have to change a focus on those. Communicable diseases may, again, hepatitis C, the last government's focus was entirely on treatment, and big banners were flown कि जी हम antiviral Pakistan में बना रहे हैं. That is not going to change anything. And if it changes anything, the time span to change that is too long. And when we talk about prevention and very basic preventions, preventive measures, let's talk about Hep C, hepatitis C. It's not just blood transfusion, it's a lot of things. And we haven't been able to impose, despite the fact that हर health minister or health ministry or government को ये बात पता है कि the major transmission is happening at the level of the syringes and needles. So एक वो focus somehow the other has to change. और जहाँ तक budget का ताल्लुक है, some of these things do not require a large infusion of money,
you can get a larger return on investment than low investments that can be achieved. But there has to be a will. हमारी बदकिस्मती ये है कि पॉलिसियां बनती हैं हर हुकूमत के साथ 5-year plans, 10 years plan, and 20-year plan, and the UN goals, etc., etc. मगर implementation नहीं होती. And unfortunately, there is no continuity between change of governments. And how to change that and defeat it, I really have at odds with that, and I don't know the answer to that question. So I just gave an example of a communicable and a non-communicable disease, and as Nahid said, आपने भी कहा कि prevention is so much better than cure, and you have the right population, as Consul General you said, a younger population, done at the right time. The downside, down the line burden on the healthcare system can be reduced tremendously. बात बार-बार आती है contribution of diaspora की. Thank you very much, Mr. Nasser Qureshi. You always very positive, and you're always ready to help your country, Pakistan. You serve Apna very well. Now I'd like to bring a very, very important person on the platform, Mr. Adil Najam, because there's so many diseases also related with the environmental issue. Okay, smog, smoking, hepatitis C or B, whatever, lungs disease, tuberculosis disease. इसका ताल्लुक environmental से भी है, water pollution से भी है, sewage system से भी है, air pollution से भी है. So I would like to invite Mr. Adil Najam Saab on board. बहुत शुक्रिया वकार साहब. Thank you for that. I think there are far more important people here who I would like to listen from, and that is why I am here, and I'm very grateful to the Consul General for her views, and other people have made very important points. Because there are so many friends, I hope they will not mind my saying so. If we think about कि diaspora क्या कर सकती है, तो I think that question needs to be asked very seriously. एक तो ये है कि I think there's a lot of good things, and I hope they continue, and I hope they remain. It has been a very nice surprise to see कि पाकिस्तान के जो numbers have stabilized the way it is. I think for a long while we will try to study and figure out कि असल में हुआ क्या. How did this happen? What did this happen? Was it the pathology? Was it the condition? Because I think that is a question जिसका science को भी interest है और policy को भी interest है. लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हमारे एक, as Aisha had mentioned, the health minister was appointed and a very competent person. And again, मैं किसी की personal की बात नहीं कर रहा, ना politics की बात कर रहा. But the way he had to be removed in the middle of this, मेरे ख्याल में हमारे लिए सवालिया निशान उठाते हैं. मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, राइट, कि एक तो मिडल ऑफ क्राइसिस है. दूसरा, जो आप डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, उसका रीजन जो था वो एक पार्टली ये था कि जनाब ये बाहर से, राइट, एंड द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स दैट जनरेटेड. सो इफ वी आर गोइंग टू बी सीरियस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द रोल ऑफ एनी डायस्पोरा इन एनी कंट्री, देन आई थिंक हमें इस सवाल से भी कोई थोड़ी सी पीस करनी पड़ेगी. We'll have to figure this out. और ये डायस्पोरा को भी समझना पड़ेगा और कॉम को भी सोचना पड़ेगा. अगर आप अगेन मुझे इजाजत दें, I hope I am among friends. I think जब पाकिस्तान में हुकूमत हो या दूसरे हो सोचते हैं कि ये डायस्पोरा कंट्रीब्यूट करें, तो आप लोग जी जो मर्जी समझ लें, उनका मतलब ये होता है कि यार तुम्हारे पास पैसे बड़े हैं, जरा मैनू भी दे दो, या आपके पास कोई और रिसोर्सेज हैं, ताल्लुकात है, मुलाकातें करा दो. एंड फ्रैंकली फॉर मैनी जो यहाँ होता है, वो भी एक अर्ज होती है कि जब मुल्क से बाहर आए हो, मेरी जो सक्सेस है वो वहां नजर आ जाए, या कोई तस्वीर हो जाए. मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनी मोटिव दिस साइड और दैट साइड. But what I'm trying to get to is कि as a mature diaspora, I think we need to come and figure out कि इसमें पॉलिसी में रोल है क्या. तरक्की किसी भी कौम की जो होती है वो कौम खुद करती है. मुझे दुनिया के 204 मुल्कों में कोई मुल्क मैं नहीं जानता जो डायस्पोरा के बाद पे बड़ा हुआ. Very well said, sir. Very well said. Thank you very much. Now I have a very important person on my team, Dr. Sana Khan. He's been in Pakistan many times. He's a very important personality here in America as well. He's a radiologist, also a neurophysicist, and very dear friend of mine, Dr. Sana Khan.
that was embarrassing. So really, I've been listening and taking some notes. Otherwise, no need for you to apologize at all. I think you're making some really, really good points. Dr. Naheed, honestly, I was listening to what you were saying and watching your slides, and Aisha, honestly, it was really. I mean, I'm just telling you guys, you're hitting on some very important points. The question is really the practical application of all of this, right? Because we can all, of course, get together and talk about ideas and thought processes and stuff. So, Aisha, let me tell you something really important. I am a radiologist, and I can tell you right now that I'm going to be out of a job within the next probably 3 to 5 years. Okay? And the reason is because of technology, because of AI. And what's happening in today's world is that AI, in my world, in which I'm working at UCLA, contributing to my own sort of, my own industries, I guess becoming less relevant, is that AI is going to take over medicine like you have not seen before within the next 10 years. When you talked about universal healthcare, it really, this is the first time I've heard anybody say universal healthcare in Pakistan. And I'm sure you guys are well aware and stuff. It's the first time that I've heard it, which is today, okay? It's going to be absolutely critical that if you guys are really thinking of that, that you must consider technology as part and parcel of that solution. Dr. Naheed, I'll tell you that, so I'm a charter member for Open in Southern California. And Apna and Open's partnership is going to be so mission critical to accomplish this. And hum log chote basis pe na, we can do maybe little things, right? But if we really marry up medicine with technology, and with the fact that now we have devices that people can wear and communicate with the device at home that then communicates directly with your doctor, and not just with your doctor, with another computer, with a massive computer sitting at Caltech. I mean, at this moment, this is what's happening. The world's about to change like you can't even imagine in the next 10 years in healthcare. Assalamualaikum. This is really very exciting to listen to all wonderful, talented people here. मैं चूंकि किसी भी गवर्नमेंट की टॉक हो रही तो क्रिकेट के बगैर बात नहीं हो सकती, तो मैं आपको 20, 25, 30 साल पहले लेके जाता हूं, जब जहांगीर खान जो है वो every year he used to be a champion, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है it used to be a failure. तो मुझे बचपन की बात याद है कि जहांगीर खान एक दफा टीवी शो पे आए थे, तो उनसे पूछा गया था कि क्या बात है कि आप इतने सक्सेसफुल हैं और पाकिस्तानी टीम जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो उन्होंने एक जो बात कही थी वो मेरे दिल में हमेशा रही। उन्होंने कहा कि मैं अकेला खेलता हूं। तो आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू द लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कभी माइंडसेट वो नहीं रहा कि हम जो है वो हाउ वी नीड टू ग्रो एज एन इंस्टीट्यूशन। जो डॉक्टर नसर ने बात की ना कि हर कोई 1.5 इंच की मस्जिद बना के चीजें कर लेता। सो दैट वाज जस्ट माय इनिशियल थॉट। मगर बहुत सी चीजें हैं पाकिस्तान में जो कि पॉजिटिव हो रही हैं और जो कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती। फ्री कैंसर पेशेंट्स का इलाज अनहर्ड ऑफ इन यूनाइटेड स्टेट्स। किसी से बात करें कि व्हाट, हाउ कैन यू ट्रीट 100% फ्री कैंसर पेशेंट्स, फ्री आई क्लिनिक्स, फ्री कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, फ्री आर्टिफिशियल लिम्स। लोग ये सब कर रहे हैं पाकिस्तान में। Trauma center free. There are so many free things going on in Pakistan. So much positive things, right? जो डॉक्टर नाहिद उस्मानी की स्लाइड्स थी वो बहुत ही आई ओपनिंग स्लाइड्स थी। प्राइमरी केयर रोल इन पाकिस्तान, दैट्स गोइंग टू बी रियली अ बिग माइंडसेट चेंज ओवर देयर। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। यहाँ पे भी मैं आई वर्क फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, और बिलीव मी फेडरल गवर्नमेंट इज द सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेदर इन यूएस और इन पाकिस्तान इज द सेम। जो डॉक्टर नसर ने बात की, हाउ टू पार्टनर द प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप, आई थिंक दैट्स वेयर द की इज। हम लोग जो है प्राइवेटली हर चीज चेंज नहीं कर सकते, फेडरल गवर्नमेंट हर चीज चेंज नहीं कर सकती। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड हाउ टू क्रिएट दैट मॉडल। सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट है,
टीवी शोज इतने होते हैं, आई विश कि हम किसी भी शो में एक कोई पब्लिक अवेयरनेस का मैसेज दे दें। ये राउंड अप मीटिंग रही आज, और ये मैं बताता चलूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान काफ़ी जाता रहता हूँ। पाकिस्तान में काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें डायलिसिस सेंटर है, आप जानते हैं डॉक्टर अदीब रिजवी को, ठीक है। और वहाँ पे जो इंडस हॉस्पिटल है वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज नफीस नागी साहब नहीं आ सके, ही वाज बिल्डिंग द शमीम एंड नागी कैंसर हॉस्पिटल विद द कोऑपरेशन विद द इंडस हॉस्पिटल which is called Jubilee Center in Lahore. Okay, so there's a lot of very big hospital built by the NGOs and diaspora in Pakistan. और अब करना ये है कि क्योंकि कौंसल जनरल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि एक जनरल मीटिंग हो जिसमें हम ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान में हेल्थ डिलीवरी में हेल्प करने के लिए। जैसे डॉक्टर सोहेल मसूद ने कहा कि ही कैन रियली क्रिएट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट एट होम। You know, that's a very good idea, and it's a very established person. You know, डॉक्टर नाहिद उस्मानी की जो ब्रीफिंग थी और जो उनके पावर पॉइंट था वो भी बहुत अहम था, और डॉक्टर आयशा अडी साहबा ने जो पूरा एक कंप्लीट प्रोफाइल दिया पाकिस्तान के व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट थिंग टेकिंग प्लेस, दैट इज वेरी ऑसम, एंड आई रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड टुडेज। डॉक्टर आमिर साहब, यू ऑल द वे फ्रॉम सैन एंटोनियो, साइमा यू आर फ्रॉम आसमा from Boston, Dr. Sohail Masood Saab, you know, Dr. Nathar Qureshi. Now the clothing point pe I would like to invite once again Aisha Ali, our Consul General Pakistan, to say everybody thank you, the clothing remarks. तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हेल्थ केयर रिपोर्ट, बहुत अच्छी जो है ये रिपोर्ट रही है, और आपने लोगों के व्यूज़ और ओपिनियन भी देखे होंगे। और मैं एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम की तैयारी कर रहा हूँ, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा इंशाल्लाह ताला इसी चैनल से, और देखते रहिए पाकिस्तान से आगे ऑन TV1। ओके, और TV1 को बिल्कुल आप अपने डायरी में लिख लें, टीवी पे लिख लें कि सैटरडे को आपने 10 बजे पाकिस्तान से आगे प्रोग्राम ज़रूर देखना है। तो नाज़रीन, अब वक्त है हमारे बहुत ही मशहूर सेगमेंट और बड़े इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट का। जनाब जमाल ख्वाजा साहब, जो रियल इस्टेट के गुरु और टेक्नोक्रेट माने जाते हैं, वो हमारे इसी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, लेट्स टॉक रियल इस्टेट। तो हम इंशाल्लाह इनका पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम की प्रोफाइल भी बना रहे हैं, जिसमें आप तमाम प्रोग्राम पिछले आप देख सकेंगे। और मैंने अपने एडिटर्स को गाइडलाइन दी है कि जितने भी अभी तक प्रोग्राम आए हैं लेट्स टॉक रियल इस्टेट के, उनको एक जगह यकजा करके और उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे उसको लॉन्च करें, ताकि लोग अपनी मर्जी के प्रोग्राम देख सकें। तो आइए लिए चलते हैं आपको प्रोग्राम लेट्स टॉक रियल इस्टेट। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। संतियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। संतियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। Assalamu alaikum Nazreen, your friend and host Jamal Khwaja with a new exciting Let's Talk Real Estate. Today we are going to talk about many questions. I have received 8 or 9 emails and asking similar questions. So what I did, I merged few questions to make you understand, and I hope it answers. It is really exciting what I'm seeing in real estate market right now. All around United States right now, only one news which is coming out every day that home prices are going up. And it's a good thing. And I'll tell you what I see, the prices are going up because affordability is becoming easier. You were paying interest rate of 4, 4.5. Now you're paying interest rate of 2, 2.5, 2.25. And that's the reason where a lot of people can afford. Yes, the home prices have gone up, but they can afford very easily because the interest rate have come down. To a large extent, it has become a half of a mortgage payment was you were paying as 4% and what you are paying at 2.5 or 2.25. So I'll start with some questions and I'll give you a little bit about the market also in between. So the first question is, I like the question. It says, I'm going out with a realtor to see homes. Do I need to pay him? So it's a great question. If you like him, pay him, or especially if it's me, I don't mind. No, I'm just kidding. No, the real estate industry is designed very well. It is designed such a way that the seller pays for both commissions, which means that the listing agent is being paid by the seller, and even the selling agent, like the buyer's agent, whoever is representing, he's also being paid by the seller. So you don't need to pay him anything. He will take care of you. And this is, I feel, the beauty of real estate is that it has been designed such a way that his loyalty, the buyer's agent, his loyalty is with the buyer. He works for the buyers. He wants to make sure that the house is good, the terms are right, the pricing is right. He is working and representing you. So hope this answer, and if you need any more clarification, you're more than welcome to call me for that. But a great question. It's a great question. So now another question is more related to the loan. He is asking, I see different rates on Google. 2.25, 2.5. So how do I know what is rate for me? It's a good question. And the answer is that you need to speak to your loan officer, because I have to emphasize here that rates are not subject to a thing. There are many factors which has to be in consideration when a rate is coming up. So number one is your credit score. It's very important. If it's a purchase, your down payment. Your down payment also plays a role. What if you're paying 3.5% down? What if you're doing 5% down, 10%, 20% or more? So that's why it's very important to know what down payment you are putting. And either it's a single family home. There is a rate difference between a single family home, a townhouse, or a condominium. There is a rate difference in it, and that will only get determined once you decide which property you're buying. Then only a loan officer, in this case, that if I am your loan officer, I'll be able to tell you. Now, the good news is that whenever we give you the rate and you signs the disclosure, that rate is locked.
So, and we can't change due to any circumstances. We won't be able to change the rate most of the cases. So, you be rest assured that whatever rate is being quoted by a loan officer, you will get that rate. And most of the time, if suppose you are going with the loan program, which is fixed for 30 years, your rate will be fixed for 30 years. So keep this in mind that you need to connect with the loan officer, talk to him, give him all the documentation. As on the previous episode, we talked about it, that you need to provide your latest 2 years of tax return, minimum 1 month of your pay stub, bank statement where the deposit money is coming from, and then he'll be able to calculate and give you an approximately rate. Yes, the rates, there's another information I want to give here. You could lock a rate for 15 days, 30 days, 45 days. So depending on the term and condition you are getting the house in, we'll be able to lock the rate accordingly, and the rates can be extended as well. Sometime you might need to pay a cost to it, but the rate can be extended for a longer period as well. So hope this answers the question you have asked me, and if you need further more information, I'm just the call away. The next question is that different question. It's saying what is the term subject to interior inspection? So I believe that these terms we normally use when you're buying a duplex, triplex, fourplex, that you drive by the area, you look at the property, you do your com check with your realtor, and then you write the offer, because they are not showing the home immediately or a unit immediately. So you get to write an offer that once I have given you this offer, but once I see the property at the time of interior inspection, this deal will come to a final position. So it is mostly, I've seen in my experience, that when somebody is buying a triplex and it's been rented out, obviously you can't just tell the tenant every day that I have a new buyer, I want to show it. So most of the time on this multiple units, we send an offer by saying subject to interior inspection, that we think this is how the house will look, but once we go inside the house, we see the property, we inspect the property, then only we'll finalize the price and the terms. So hope this answers, and I like that people are looking into duplexes, triplexes or fourplexes. It's a great way to invest and have a home as well. So great question. Thank you. And the fourth question, I like this. It says, what's the difference between bank and a mortgage broker? So great question. I'm a mortgage broker. And the first difference, I'm not here to badmouth one or the other, but I'll tell you, banks are bigger and, they have a different way of working. Mortgage brokers, basically, they are like your broker in between. Looking at your qualification, looking at what you need, what you are trying to achieve, they can take you to the banks which suits the best. Like, the bank wants to lend you, and whatever their requirement of qualification is, you are fitting into it. So this is one basic difference I've seen, that in the bank, they go by certain ways of doing things, or I'll say very, it's not nice to say, but I've seen banks are little difficult to work with because there are so many people doing different things. Mortgage bank is little easy. Like mortgage broker, their target is to get the things done. I have always been a mortgage broker, and I've been a mortgage banker as well, that as a mortgage broker, I've seen people work much harder, because, there's in the bank, people are walking into deposit or take out the money and they want to take a mortgage. So it's very easy to get the customers. But on the mortgage broker side, you really need to work hard. And I feel as a mortgage broker, you have more option. You go to bank, you can only take the loans which they are offering you. But if suppose there is some different product, this mortgage broker will be able to go out, look for a different product and provide you. And I personally feel that
mortgage broker service is much better than the banks. But that's my take on it. But thank you very much for asking that question, and that concludes today's question. I do have many other questions, but I just thought, like, keep it so you guys can understand better. But if you have any other question, my phone number, my email address is coming up. Please do not hesitate to contact me. As a loan officer, I'm here to help you. Don't get scared of this, that market is very high. Yes, market is high, but believe me, the affordability is also much better now. So please go out, look for a home. If you need any help from me, call me, text me. I'm here for that. And most importantly, please subscribe to my channel. If you subscribe to it, every time whenever I put up a new video, you will be able to see it. And then we can communicate this way. So keep on watching. Let's talk real estate. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे, सफ़ीर पाकिस्तान हेल्थ केयर प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और जमाल ख्वाजा साहब की मज़ेदार बातें, इन्फॉर्मेटिव भी आपको पसंद आई होंगी। जैसा कि वो काफ़ी ज़ोर शोर से प्रोग्राम करते हैं, बड़े जज्बे से, जोश से प्रोग्राम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और तो नाज़रीन, बस अब आपसे जाना चाहूँगा, वक्त ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है और जाने का वक्त है। आप एंजॉय करें अपना लंच या कॉफ़ी, टी, और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आपको इसी मोड पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे, सफ़ीर पाकिस्तान, TV1 पे। इसके साथ आपका मेज़बान वक़ीर अली ख़ान इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहेगा। जहाँ भी रहें, मोहब्बत से रहें और प्यार से रहें। खुदा हाफ़िज़।